Hello students, today we are going to discuss the most important chapter of 12th class chemistry, organic chemistry, the alcohol, phenol and ether, the most important and expected question from last 10 years ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ, ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਈਥਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, alcohol upon oxidation that will give the aldehyde, and aldehyde upon oxidation again will give the acid। ठीक है जी, this is the basic funda, and acid, this is the oxidation step, and if we reduction of acid, reduction that will give aldehyde, and upon reduction of aldehyde that will give the alcohol, this is a reversible। so this is the major factor which is used again and again in this chapter। alcohol again एक बार दोबारा देख लो, alcohol upon oxidation that will give the aldehyde, same number of carbon atom, and further oxidation that will give acid, and upon reversible step acid on reduction give aldehyde, and then aldehyde on reduction with reduction will give alcohol is the backward step। ठीक है जी, सो ये ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन के बेसिकल स्टैप है, ये याद रखने हैं। सो फर्स्ट स्टैप, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की गल करनी है, इट मीनस प्राइमरी अल्कोहल, सैकेंडरी अल्कोहल ते टर्शियरी अल्कोहल की गल करनी है। प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल किहड़े-किहड़े हुंदे सानू ऑलरेडी क्लीयर होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल किहड़े होणगे जिन्हां दे कोल एक अल्काइल ग्रुप होएगा, मिथाइल ग्रुप स्पैशली, सैकेंडरी दे विच 2 होणगे एंड टर्शियरी दे विच 3 होणगे मिथाइल ग्रुप। ठीक है जी, फर्दर सो फर्स्ट स्टेप च देखते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव द एल्डिहाइड एंड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल कि जिस तरह इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल लेने अपॉन ऑक्सीडेशन दैट विल गिव इथेनॉल, दैट इज अगेन एल्डिहाइड, एंड विच जेकर ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਰਦਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, दैट विल गिव द एसिटिक एसिड, एंड फर्दर दैट विल गिव डिसोसीएट एंड गिव द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, एसिड तक साढ़े कोल दे रही है ऑक्सीजन। अगर सैकेंड अल्कोहल की गल करते हैं तो सैकेंड अल्कोहल विल गिव द कीटोन, तो इत्थे फॉर्मेशन की हो जाती है, जिन्ने नंबर कार्बन सीगे 3 तो 3 कार्बन वाले ही एल्डिहाइड जां उहनूं कीटोन कह दिंदे आपां। फर्दर ऑक्सीजन वाला ओके दे दिंदा सानूं क्योंकि 3 कार्बन है इत्थे, फर्दर ऑक्सीजन दैट विल गिव द एसिड एंड 1 कार्बन विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, and in case of oxidation of tertiary alcohol is not possible in ordinary oxidizing agent, under the drastic condition the oxidation of a tertiary alcohol is yield a ketone and carboxylic acid with lesser number of carbon atom। अगर tertiary alcohol की गल करते हैं that will give the alkene, and further oxidation will give the ketone and acid which will give in the last step that will give the carbon dioxide and वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये सी ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है जी, सो प्राइमरी अल्कोहल सानू की दे दिंदा, दैट इज एल्डिहाइड एंड फर्दर एसिड दे रहा। सैकेंडरी अल्कोहल सानू की दे रहा है, कीटोन दे रहा है, एंड फर्दर दैट विल अगेन एसिड, एंड सिमिलरली टर्शरी अल्कोहल है दैट विल गिव अल्कीन, एंड फर्दर दैट विल गिव द कीटोन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, एंड फर्दर दैट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है जी, दिस इज द memory booster step which will help to remember the oxidation of alcohols। so next step, next question है, why do alcohols have higher boiling point than haloalkane of similar molecular mass। so let's see that boiling point है, boiling point majorly depend करते हैं that is on the hydrogen bonding। ठीक है, अगर अल्कोहल की गल करते हैं ROH, ठीक है, and that show अगर अल्कोहल की देखा जाए तो इस तरह कहना की है कि एक अल्कोहल मोलीक्यूल दूसरे अल्कोहल मोलीक्यूल के नाल फर्दर कहता इत्थे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता,
जिन्नी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होएगी उन्नी ज़्यादा की है उहदे विच बॉइलिंग पॉइंट उहदे इंक्रीज हो जाएंगे। द इंटरमोलिकुलर forces of attraction between the molecule of alcohol are stronger hydrogen bonding. On the other hand, intermolecular force of attraction between the molecule of haloalkane are comparatively weaker dipole-dipole interaction, and due to the stronger intermolecular force of attraction in alcohols, alcohol have higher boiling point than haloalkane of comparable molecular mass. अगर haloalkane की गल करते हैं, मान लो कि साढ़े को CH4 है ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C2H6 है, ठीक है जी, मीथेन है ਜਾਂ ਈਥੇਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी दैट विल डजंट शो द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर सोल्यूबल, ठीक है, मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगेन सिमिलर क्वेश्चन कि अल्कोहल की अगर गल देखी जाए दैट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर दे विच ज़्यादा सोल्यूबल है क्योंकि दैट विल फॉर्म है ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज द हाइड्रोजन present and also electronegative element oxygen is also present there and that will show the hydrogen bonding, ठीक है। इस करके किया अल्कोहल आर जनरली मोर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करते हैं, दैट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। एज इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द एंट्रेंस के विच भी बार बार क्वेश्चन आता है। वट इज ए रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के की है एसिड क्लोराइड जो साढ़े को होंगे RCOCl दैट विल गिव ऑन रिडक्शन दैट विल गिव एल्डिहाइड फॉर्मेशन होंगी है, ठीक है। तो ये रिडक्शन कि करते हैं, रिडक्शन है दैट इज ए लेड बेरियम सल्फेट सल्फर और किनोलिन, सल्फर और किनोलिन है आ यूज़ करते हैं एज ए रिजेंट ਜਿਹੜਾ कि है सानू की फॉर्मेशन दिंदा पिया एल्डिहाइड की फॉर्मेशन दिंदा पिया। So formation of aldehyde from acid chloride is called as a Rosenman reduction, and when acetyl chloride is treated with H2 in the presence of lead barium sulfate it will give a acetaldehyde as a product। एक जनरल रिएक्शन दिता होया aldehyde formation। सेकेंड दिता होया that is the example acetyl chloride है that will upon H2 reduction lead barium sulfate sulfur quinoline that will form a acetaldehyde plus HCl। acetaldehyde acid chloride is the मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर सिमिलरली इस तरह कहना साढ़े को क्वेश्चन हो जाए, देखो की है अगर साढ़े को की है एसिड क्लोराइड सीगा वाला है अगेन सेम रेजेंट सारी कंडीशन सेम होन तो उस वेले कहता की है जिस तरह साढ़े को बेंजोइल क्लोराइड है दैट विल अगेन गिव द RCOOH, ठीक है, दैट इज अ बेंजाल्डेहाइड की फॉर्मेशन होएगी। अगेन दिस इज द इंपोर्टेंट रिएक्शन है विच विल बी आस्क अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की गल करते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। हुण देखो की है एसिड ते देखो अल्कोहल ते एसिड, ठीक है। अगेन एसिडिक नेचर आप दो कंडीशन के उत्ते डिफाइन कराया करनी है, ठीक है। बट फर्स्ट कंडीशन दैट विल गिव द H पॉजिटिव आयन, सेकेंड कंडीशन की H पॉजिटिव आयन देने तो बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट रह जाऊगा दैट इज मे बी स्टेबल और नॉट, स्टेबल हैज़ नहीं है। ये दो कंडीशन असी चैक करा करांगे तो इन दोनों कंडीशन के उत्ते असी दस्सिया करांगे विच वन इज अ स्ट्रोंगर एसिड, ठीक है। हुण फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अल्कोहल दैट विल गिव अल्कोऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयन। Alkoxide N is shown here, and in case of a water molecule that will give me hydroxide N and H positive ion, ठीक है। हुण देखोगे फर्स्ट स्टेप एसिडिक द कंडीशन है H positive ion, both reaction will give H positive ion H positive ion। Second step is the remaining product after the removal of H positive ion is stable or not, ठीक है, whether stable or not alkoxide ion or hydroxide ion which is more stable, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी दे। तो जो भी आप इस चीज़ की गल करनी है पहली गल आप ये देखनी है
कि दोनों के H पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों के नाल अटैच किहड़े ग्रुप है, अगर देखा जाए तो इत्थे साडे कोल कहंदा की है अल्कोक्साइड आयन दे विच देखिया इहदे विच आर ग्रुप लग्या होया, दैट इज इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिहड़ा इलैक्ट्रॉन दे रहा है। इधर हैगा हाइड्रोजन हैगा, ठीक है जी, विच इज़ नॉट इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। हुण आर ग्रुप है दैट विल इनक्रीज द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन। अगर जिन्ना ज़्यादा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ते इनक्रीज करेगा, मतलब इलैक्ट्रॉन ज़्यादा उन्होंने प्रोड्यूस करके देगा, उहदे ते देगा, तो उस चीज़ के नाल H पॉजिटिव का ब्रेक हैगा वो की हो जाएगा, बिकम डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि H पॉजिटिव तो जोड़े H तो इलैक्ट्रॉन जोड़े लै रहा है वो घट लवेगा, क्योंकि आर तो उन्होंने ईजिली अपने आप प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। सो ये H पॉजिटिव आयन बनने की टेंडेंसी थोड़ी जी घट जाएगी, ठीक है। तो ये एज इट इज रहूगी। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पॉइंट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड as electron releasing group are in alcohol increase electron density on oxygen and tending to decrease the polarity of OH bond and this decrease the acidic strength, इस करके acidic strength decrease हो रही है, ठीक है। and further the presence of electron releasing effect, electron releasing minus R group in alkoxide ion destabilize it and thus the decreasing the acidic strength of alcohol, तो इस करके acidic strength alcohol की करती पई है, decrease करती पई है। further more the number of electron releasing group are एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल स्टार्ट डिक्रीजिंग, कि इस तरह जिन्ने आर ग्रुप इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा होणगे, जिस तरह सैकेंडरी अल्कोहल दे 2 होंगे, टर्शियरी अल्कोहल दे 3 होंगे, तो वो नाल की हैगा कि जिहड़ी हो जाएगा एसिडिक करैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी। बट वाटर के केस के इदा की कोई भी इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होंगे, इस करके ये वाली कंडीशन नहीं होंगी, तो दैट आर स्ट्रोंगर एसिड, ठीक है। सो वाटर इज स्ट्रोंगर एसिड। सी ए सी क्वेश्चन साडा अल्कोहल तो वाटर का नाल दे अल्कोहल की टाइप के उत्ते। नैक्सट अगेन नेक्स्ट है राइट द विक्टरमियर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, विच वर आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन वेरियस एग्जामिनेशन स्पेशली इन PHEV एंड CBSE बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट जिस तरह देख रहे हैं विक्टरमियर टेस्ट विच, ठीक है, विक्टरमियर टेस्ट के टोटल आप 3 स्टैप फॉलो करते हैं, ठीक है। जिस तरह है ट्रीट द गिवन अल्कोहल विद रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन टू गिव अल्काइल आयोडाइड। सेकंड स्टेप ट्रीट द अल्काइल आयोडाइड विद सिल्वर नाइट्राइड टू गेट द नाइट्रो अल्केन। एंड थर्ड स्टेप ट्रीट द नाइट्रो अल्केन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, एंड दैट विल गिव द सोल्यूशन ऑफ अल्केलाइन फॉर्मेशन है। अगर साढ़े को ब्लड रेड सोल्यूशन कलर इंडिकेट्स होएगा उत्थे, दैट विल इंडिकेट्स द प्राइमरी अल्कोहल, सोल्यूशन इज प्राइमरी अल्कोहल। इफ ब्लू कलर इंडिकेशन होंदी है द सोल्यूशन इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर की हैगा कलरेशन जी है कलर लैस होंदी पई है, कलरेशन कोई नहीं आती पई है उत्थे, तो दैट विल इंडिकेट द दिस इज ए टर्शरी अल्कोहल, ठीक है जी। द डिफरेंट रिएक्शन जोड़े रिएक्शन है वो आप इस तरह शो करते हैं, जिस तरह देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल RCH2H फॉस्फोरस प्लस I2 दैट विल गिव ए RCH2I अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। फर्दर सिल्वर नाइट्राइड दैट विल फॉर्म ए नाइट्रो अल्केन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फर्दर दैट इज द एडिशन ऑफ नाइट्रस एसिड HONO दैट विल गिव द नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज ए नाइट्रोलिक एसिड, दिस इज a blood red color and hence indicate that this is the solution is primary alcohol solution. In case of secondary alcohol, that will give first step phosphorus plus iodine to form give a ido product. Second, that is a silver nitrite that will give a nitro product. And in the third step, next with the addition of HONO, that is a nitrous acid, there will be formation of a pseudo-nitrol, that is a blue coloration the formation होंदी है pseudo-nitrol दी, ठीक है जी। And in case of tertiary alcohol, in tertiary alcohol first step phosphorus plus I2 that is iodination हो रही है। second step ਦੇ ਵਿੱਚ silver nitrate that is a nitro formation and third step ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ nitrous acid ਦੇ ਨਾਲ कोई भी रिएक्शन अकर नहीं होएगा, नो रिएक्शन होएगा, कलरलेस सोल्यूशन होएगा, तो दैट विल इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज ए टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। इस तरह आप इन्होंने डिफरेंशिएट कर पाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी तो टर्शरी अल्कोहल। सो ये वाले सानू बिल्कुल इधर रिजल्ट भी पता होना चाहिए, तो किहड़ा अल्कोहल किहड़ा रिएक्शन दिंदा पिया भी पता होना चाहिए, ठीक है जी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज ए
Discuss the reaction and mechanism of acidic dehydration of ethyl alcohol to prepare ether. And so start करते हैं. Dehydration of primary alcohol like ethanol will with the concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin that will give ether. एक सानू सिंपल पता होना चाहिए कि अगर ਆਪਾਂ अल्कोहल ਨੂੰ दो कंडीशन है 413 कैलविन है ਤੇ 443 कैलविन है. 443 कैलविन ਤੇ ਅਲਕੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 413 ਤੇ that is ਈਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫਿਨੋਮੀਨਾ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है. 413 कैलविन ਦਾ फर्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ that is a dehydration primary alcohol with ethanol concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin give ether. एग्जाम्पल देती है इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन दैट विल फॉर्म में डाई इथाइल ईथर, ठीक है. फॉर्मेशन होती पई है प्रोडक्ट दी मेजर. सो मैकेनिज्म की गल करते हैं तो फर्स्ट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड है दैट विल गिव एच पॉजिटिव एंड बाइसल्फेट दैट इज फॉर्मेशन. एंड फर्दर सेकेंड स्टैप फर्स्ट विच आ जाता प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज अल्कोहल gain the H positive ion to form a protonated alcohol. Second step which removal of water, and there is removal of water. If removal of water, then there is a formation of positive formation protonated alcohol ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ that will migrate to the second carbon और neighborhood to the oxygen atom carbon, ठीक है. एंड फॉर्मेशन साढ़े को आ वाला प्रोडक्ट हो रहा प्रोटोनेटेड ईथर बनते पे है, ठीक है. एंड नैक्सट स्टैप के देखते हैं आप कि उस तरह जिस तरह से कि एच पॉजिटिव वो साढ़े को रिमूव हो जाएंगे, ठीक है जी. तो ये वाला की है नैक्सट स्टैप के जो ऑक्सीजन ऑक्सीजनल हाइड्रोजन दैट विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन तो रिमूवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एच पॉजिटिव आयन ईजीली रिलीज हो जाएगा तो इतने फॉर्मेशन साढ़े को ईथर हो जाएंगे. ये साढ़े तो तीन स्टैप का रिएक्शन हो जाएगा दैट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म है ईथर. तो ईथर की फॉर्मेशन साढ़े को हो जाएगी, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग 1 प्रोपेनॉल to 2 propanol. So first we have to write the formula of propanol, 1 propanol or 2 propanol, ठीक है जी. And now second step step-wise mechanism, step-wise reaction is here. First we treat with the 1 propanol or propyl alcohol with the concentrated sulfuric acid that will give the alkene, and alkene with the addition of HBr that is a maybe HBr मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है. अगर इतने आप मार्कोनिक रूल लगाने तो नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एसिड विल गो टू द कार्बन एटम वेयरिंग द स्मॉलर और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो Br इतने अटैच हो जाएगा. अगेन दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन दे विच दैट विल गिव द अल्कोहल फॉर्मेशन दैट इज 2 प्रोपेनॉल, ठीक है. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. Next question that is the solubility of alcohol in water decrease with increase in molecular mass. Simply as we increase the non-polar part, the polarity also start decreases and also solubility start decreases. As the molecular mass of alcohol increases, size of alkyl group increases, magnitude of hydrogen bonding decreases and hence solubility decreases, ठीक है. Next question है why primary alcohols are more acidic than alcohols secondary or tertiary alcohols. Again similarly in case of structure of primary alcohol and secondary alcohol, in primary alcohol 1 CH3, secondary alcohol is having a 2 CH3, that is a CH3 that will show a plus I effect that are the electron losing group 1 CH3 electron losing group, and here in secondary alcohol that is a 2 CH3 group which will increase the electron density more and more as compared to primary alcohol on the carbon as well as oxygen atom, ठीक है. And hence we know that acidic nature of compound is based upon the mole of H positive ion. The easier the release of H positive ion, more will be the acidic strength.
As we know in the structure above, the two alkyl group in the secondary alcohol which are electron releasing in nature. So due to electron releasing effect plus I effect, the electron density will be more on oxygen atom in secondary alcohol as compared to the tertiary alcohol. Larger electron density on oxygen will hold the oxygen atom strongly, and hence removal of H positive and difficult in secondary alcohol, and hence secondary alcohol are more acidic than primary alcohol. ठीक है जी, इस करके कहना प्राइमरी अल्कोहल ਜਿਹੜੇ ज़्यादा एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, that is the oxidation type question. Oxidation, that is a specific oxidation, that is on the red hot copper, that is a 573 Kelvin. ठीक है, टेम्परेचर एंड कॉपर, रेड हॉट कॉपर. अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਪਰ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਸਟੈਪ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏਗੀ. ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਣਗੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ. जिस तरह प्राइमरी अल्कोहल है 1CH3 है, ठीक है, OH है, दैट विल गिव ए सिंपल aldehyde formation. ठीक है, and in case of secondary alcohol that will give the ketone. This is also simple. And similarly tertiary alcohol है upon copper 573 Kelvin, that will give the alkene formation. मतलब जिन्ने भी ऑक्सीजन की सारे का फर्स्ट स्टैप फॉलो कर लिए तो वही साडा आंसर होएगा इत्थे. ठीक है, ऑक्सीजन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल अपॉन द रेड हॉट कॉपर. ठीक है, नेक्स्ट एसिडिक डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म टू फॉर्म ए इथीन. ठीक है, अगेन दिस विल ऑल्सो रिपीट इन द ईथर चैप्टर. ठीक है, इत्थे भी रिपीट हो रहा तो ईथर दे विच भी हुंदा है. फर्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल लाइक इथेनॉल with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin give the ethers. हाँ जी, जो गल करते हैं 443 कैलविन की तो साढ़े को फॉर्मेशन होंगी पई है इथीन की फॉर्मेशन है. ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है. जिस तरह आप फर्स्ट करते हैं इन दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन एज सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव H positive and bisulfate ion. First step, that is a protonation of ethanol or alcohol. In the first step, that is a protonation of alcohol. Protonation of alcohol ethanol है, ethanol the protonation that will form a protonated alcohol. In the second step, that is the formation of a carbocation as oxygen bearing the positive charge that need the electron from CH2 group, and after the removal of electron that will form a carbocation. ठीक है, ethyl carbocation formation हो रही है plus water. And third step, that is elimination of proton from the ethene to form an ethene. This is the removal of neighborhood hydrogen and formation of ethene as the major product with H positive. And जिस तरह H positive की एडिशन की है उसी तरह H positive आउट हो रहा. कैटलिस्ट यही होंगे, जिस तरह कैटलिस्ट में ऐड करते उसी तरह रिमूव कर देंगे. ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद द concentrated nitric and concentrated sulfuric acid. Again one of the most important question, phenol when treated with, these are the important question of phenol. Next this will form a picric acid the formation that also called as a 2,4,6 trinitrophenol, TNP. Trinitrophenol also called as a picric acid containing the 3 nitro group 2,4,6 position. Next is the naming reaction, that is the dose process. It is a conversion of chlorobenzene into phenol. When chlorobenzene treated with the sodium hydroxide will give the sodium phenoxide. Further dilute HCl ਦੇ ਨਾਲ formation ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, phenol ਦੀ formation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. तो that will called as a, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ dose process ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ठीक है जी. फर्दर अगर देखा जाए रिएक्शन ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ H ਤੇ Cl इथों आउटिंग हो जाएगी, दैट इज ONA फॉर्मेशन हो रही है. नैक्सट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਦੇ ਨਾਲ Na ਤੇ Cl ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆउटिंग ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ OH ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਨੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ दैट इज द शॉर्टन बॉमन रिएक्शन. शॉर्टन बॉमन रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਤੇ
benzoyl chloride acid chloride ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ in the presence of base that will give a phenyl benzoate, ठीक है। HCl ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ that is a formation of a phenyl benzoate. This is the main product of a Schotten-Baumann reaction. Next, the reaction of a phenol with the benzene diazonium chloride. When benzene diazonium chloride is react with the phenol, and here is the H benzene and H ਤੇ Cl out ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ formation of para hydroxy azobenzene, that is also called as orange dye. ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ this is also called as a coupling reaction ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲ, H ਇੱਥੋਂ ਤੇ HCl ਇੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ formation of ਐਜ਼ੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ para hydroxy azobenzene, that is also called as a orange dye, ठीक है। Next is the phenol is converted into the benzene. Simplest and important reaction, that is a phenol is converted directly into the benzene by using the reaction zinc dust reaction. In the presence of zinc dust, that will give the benzene formation, ठीक है जी। Next, that is the next question है, complete the reaction. is in this reaction sodium salt of acid and alcohol group are both present. In the presence of sodium hydroxide and calcium oxide and heat, it will form a phenol as a major product. Again, this is shown that as Na2CO3 formation and H is attached here, this is the formation of a phenol as a product, ठीक है। formation साढ़े को हो रही है। Again, this is the application of methane gas preparation, ठीक है। Next, complete the reaction of a similar reaction in the presence of sodium hydroxide, that will also form sodium carbonate and H attached here. This is the formation of chlorobenzene as a major product. Next reaction, chlorobenzene when treated with the water in the presence of silica oxide, that will form a phenol formation हो रही है, ठीक है। H से Cl as a waste product out हो जाएंगे। Next question है, when phenol react with the sodium and ammonia, phenol react with the sodium, that will form a sodium phenoxide, ठीक है। sodium phenoxide है, and in case of ammonia, that will treat with the ammonia in presence of zinc chloride, will give the aniline formation, ठीक है जी। Next reaction है, when phenol react with the benzene diazonium chloride. Again, this is a coupling reaction or also para hydroxy azobenzene dye formation हो रही है, and nitro group N2, that is the azo compound para hydroxy azobenzene orange dye coloration formation हो रही है। Next, zinc acid and phenol treated with the zinc dust, so zinc acid, that will give again a benzene as a major product and zinc oxide formation अलग हो जाएगी, ठीक है। Next, acid anhydride है, phenol treated with the acid anhydride, they will give the phenyl acetate formation हो रही है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। ਇੱਥੇ H ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ next question, that is a phenol react with the chloroform. Phenol react with the chloroform, that is form a ONA sodium phenoxide with CHCl2. again in presence of base will form a ONaCHO, ठीक है। sodium salicylic, again in presence of HOH1 will give the OH and CHO, that is a aldehydic part, and this is also called as a salicylic formation. Salicylic formation, this is also called as a Riemann-Tiemann reaction, again one of the important reaction. And with the phenol react with the nitric acid, in case of concentrator, that will give a 2,4,6 trinitrophenol, and in case of dilute nitric acid will give the ortho and para product formation 2-nitrophenol and 4-nitrophenol, and major product, that is a para or 4-nitrophenol, para product or 4-nitrophenol is the major product, ठीक है जी। Next question is, explain why chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid. In case of chloroacetic acid, this is a chloroacetic acid. In case of chloroacetic acid, that is a 1 electron withdrawing group minus I effect showing group that had tendency to
withdraw electron toward itself। सो इस तरह कहता की है कि ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ Cl ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ OH ਬੌਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਟੁਵਰਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, Cl ਐਟਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ OH ਬੌਂਡ ਦਾ ਪੋਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਐਸਿਡਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ दैट more the number of electronegative element or group attached and more will be the electronegativity हो जाएगी, ठीक है जी। So in case chloroacetic acid that is a stronger acid than acetic acid as Cl is electron withdrawing group, it increase the acidity or the acidic nature acetic acid by dispersing the negative charge by the negative induction effect and stabilizing acetate ion। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਟੇਟ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है दैट इज अल्कोहल आर इजीली प्रोटोनेटेड इन कंपेरिजन टू फिनोल। इन अल्कोहल दैट इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज लोकलाइज एंड ईजिली अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ਲਈ ईजिली अवेलेबल है प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम इन द फिनोल इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस स्टेप के ऑक्सीजन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ that will participate in the resonating structure and hence is delocalized and thus the not easily available for the protonation। So alcohol are easily protonated in comparison to the phenol, ठीक है। alcohol are easily protonated and chloroacetic and next question is orthonitrophenol and paranitrophenol are more acidic than phenol, why? In case of orthonitrophenol and paranitrophenol, the presence of electron withdrawing group, nitro group, that is electron withdrawing group, as already discussed in the last question, more is the number of electron withdrawing group, more is the acidic nature। So in case of nitrophenol, the presence of electron withdrawing group nitro, that will increase the acidic strength of phenol। This effect is more predominant when such a group is present at ortho and para position with respect to OH group. It is due to the effective delocalization of a negative charge in the phenoxide ion। This is the answer। Next important question is again why phenol is more acidic than alcohol। Again we have to follow the two steps for the defining the acidic nature of any compound। First that will give H positive ion and second one after the removal of H positive ion whether the product form is stable or not, ठीक है जी। दो स्टेप फॉलो करांगे फिनोल ते अल्कोहल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਨੋਲ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫਿਨੋਲ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ROH ਹੈ that will give only alkoxide and H positive ion। अल्कोक्साइड आयन है फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है जी। तो जो आप देखते हैं इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन फिनोल के देखते हैं इन केस ऑफ फिनोल डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्मड हेयर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जिस तरह डीलोकलाइजेशन होती पई है पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज होता पाया फर्दर रिंग के फॉर्मेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे पई इस तरह कहते 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल के बनदियाँ पई, ठीक है। इसी तरह ड्यू टू रेजोनेंस द ऑक्सीजन एक्वायर द सम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सैकेंड टू फोर्थ जो देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इट विल स्ट्रोंगली अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ एंड H पॉजिटिव आयन रिलीज। इस करके कहते हैं H पॉजिटिव आयन ईजिली रिलीज कर जाते हैं, इट मीनस दैट विल शो एसिडिक नेचर, ठीक है। इस तरह फिनोल फॉर्मेशन दिंदा ऐसे फिनोक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव आयन। नैक्सट स्टैप के देखते हैं कि फिनोक्साइड फर्दर कहता की है वो अपने फिर दोबारा अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर डीलोकलाइजेशन होती है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन से दैट विल पार्टिसिपेट इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो शो की करते पे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हैंस अगेन शो स्टेबिलिटी मोर एंड मोर। इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाय द ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू अ डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड दस द फिनोक्साइड आयन इज रेडली फॉर्म्ड due to dissociation of phenol। On the other hand neither alcohol nor alkoxide ion is resonance stabilized, ठीक है जी। अब वाला फर्दर कहते हैं फर्दर की है कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना ही स्टेबलाइज है एंड ऑल्सो
present of a plus effect, increase the electron density on oxygen in alkoxide and destabilize it. ठीक है जी, ये stability भी घटा देता है, and thus the alcohol do not dissociate to give H positive and easily, and a phenol and hence the phenol are more acidic than alcohols. ठीक है जी. Next question is write a short note on coupling reaction. Again coupling reaction, that is also known as formation of orange dye formation है. Benzene diazonium chloride treated with phenol, that will removal of HCl and will give the azo product para-hydroxy azobenzene as a major product. Orange dye formation है, color है. And next question है, how will you convert phenol into benzoic acid? Phenol further treated with zinc dust will give the benzene upon alkylation, Friedel-Crafts alkylation, that will give the methyl alcohol, sorry toluene formation हो रही है, methyl benzene, and further oxidation will give the benzoic acid as a major product. ठीक है जी. Next question है, the phenol has higher boiling point than toluene due to presence of polarity of OH bond in the phenol, more polar, high melting and boiling point. ठीक है. And in case of toluene, only aromatic compound, non-polar compound or non-polar part is larger than polar, so no hidden bonding and no boiling point exists. ठीक है. Next, it has to distinguish between alcohol and phenol. Phenol turns blue litmus solution into red, but alcohol do not. This is the basic test. ठीक है. Next I discuss the preparation, reaction preparation of phenol from cumene. Cumene, this is also one of the important reaction from the cumene. This is the formula of cumene: benzene ring CH, CH3, CH3 upon oxidation, and that will give a cumene hydroperoxide. The further in the presence of H positive and water will give the phenol and acetone as a major product. Phenol is the major product. ठीक है जी. This is the next question is give the use of ether. Diethyl ether, that is a question of ether. Diethyl ether is an important industrial solvent. ठीक है. Next, that is it is also used in a refrigerant and is used in the surgery as a anesthetic. ठीक है जी. Next है, why are the ether relatively inert compound? कि ਜਿਹੜੇ ether है ਉਹ वाले ਕੀ ਹੁੰਦੇ ROR is the ether general formula है. An inert compound है because the functional group of ether O does not contain any active site. ठीक है. Therefore the under ordinary condition they are stable to base, dilute acid and other oxidizing and reducing agent. Next है, functional isomer of a ethyl alcohol is, that is a dimethyl ether is the functional isomer. ठीक है. Next again is the important question. The COC bond angle in ether is higher than HOH bond angle in water through hybridization in both the gases. ठीक है. अगर हाइब्रिडेशन भी सेम है बट फिर भी ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. 110 ਹੈ ਈਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 104.5 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ. The bond angle in ether and water are 110 104.5 degree. Each has a tetrahedral shape due to the sp3 hybridization and show deviation from tetrahedral angle due to its repulsion. The bond angle in ether is greater than that of water due to greater repulsive interaction between the alkyl group and hydrogen atom in water. क्योंकि कहता ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is the ether and this is water. In case of ether there are presence of 2 alkyl group which are also repulsive in nature. More the number of alkyl group, more will be the repulsion. So according to Vesper theory, that is a lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. So ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, bond pair repulsion ज़्यादा हो जाती है due to alkyl group, और alkyl group larger size ਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ repulsion ज़्यादा, ਤਾਂ bond angle भी ਕੀ हो जाता, larger हो जाता. Next है ether possesses dipole moment even if the alkyl group in the molecule are identical. कि ईथर ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है
ਵੈਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਮ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 0 ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਈਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स सी द आंसर। ईथर प्रोजेस से एंगुलर स्ट्रक्चर similar to water with the oxygen involved sp3 hybridization. Oxygen is surrounded by the OR by two OR bond and two lone pairs, and due to the angular structure and ether have a dipole moment if two the alkyl groups are identical, because the CO bond moments do not cancel each other, and for example dimethyl ether has a dipole moment 1.3 d. So this is the main reason and answer. Next question है, why did the tertiary butyl ether cannot be prepared by Williamson synthesis? Again question important आ जाता, पहले करते हैं Williamson synthesis है कि Williamson synthesis, that is a formation of ether preparation, the one of the most important question, but the condition is that there must be presence of primary alkyl halide, ठीक है। दिस इज द alkyl halide with sodium alkoxide ion, ठीक है, सोडियम इथोक्साइड आयन जिसका एग्जाम्पल है, एंड फर्दर फॉर्मेशन साढ़े कोल की हो जाती है, दैट इज द ईथर फॉर्मेशन हो जाती है, NaBr आउट हो गया एंड ईथर फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट मस्ट बी ए प्राइमरी होना चाहिए विद सोडियम अल्कोक्साइड इज नोन एज द विलियमसन सिंथेसिस, दिस इज द मेजर कंडीशन। If we use the secondary or tertiary alkyl halide rather than primary, that will is cause a limitation of this Williamson synthesis reaction. So next let's come here, why did the tertiary butyl ether cannot be prepared Williamson synthesis? To prepare tertiary butyl ether Williamson synthesis, we require the tertiary butyl bromide and sodium tertiary butoxide. Since the tertiary butyl bromide is a tertiary alkyl halide, it prefer undergo elimination rather than the substitution due to the sterically hindrance structure, and therefore the isobutylene is obtained as a product rather than that of a tertiary butyl ether, ठीक है। इस करके साढ़े कोल ईथर बनने की जगह इत्थे की है अल्कीन या अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है ड्यू टू मोर repulsion, ठीक है। नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर लोअर देन दैट ऑफ कोरस्पोंडिंग आइसोमेरिक अल्कोहल, कहते ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है घट होंगे एज कंपेयर टू अल्कोहल, क्योंकि ईथर की है ईथर हैव लो पोलैरिटी, देयरफॉर डू नॉट शो एसोसिएशन बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट आर हायर, क्योंकि ईथर दे विच दोनों साइड की है साडे कोल की है ईथर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है विच आर नॉन पोलर पार्ट। अगर वाटर दे विच देखा जाए तो वो दोनों साइड हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये कोल की है नॉन पोलर पार्ट घट होंगे। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर द मिसिबिलिटी। अगेन मिसिबिलिटी डिपेंड अपॉन द सोलबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इथोक्सीथेन इज मिसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल एज शोन, दिस इज डाइथाइल ईथर, एंड फर्दर देन वाटर मॉलिक्यूल दे नाल, एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल दे नाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते पे जिन्नी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मोर विल विद द बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर विल विद द मिसिबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस डन। नेक्स्ट है डाइथाइल ईथर इज completely soluble in water, but diethyl ether is soluble in water in smaller extent, कि अगर R ग्रुप तो इत्थे यूज़ कर लिया आप CH3 तो ईजिली सोलूबल है, अगर CH3 CH2 इथाइल ग्रुप यूज़ करते हैं तो वो कहते सोलूबिलिटी घट जाती है ड्यू टू इनक्रीज इन द नॉन पोलर पार्ट सिंपली, ठीक है। एंड सोलूबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द ईथर एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड हाउएवर एज द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक R group increases or non-polar part increases, solubility of ether in the water decreases because of a steric hindrance, for example
dimethyl ether is completely soluble in water, but diethyl ether is soluble in water to a smaller extent. ठीक है, इस important सा question last which की है. Now what is a formalin solution? This is also a part of next chapter. Aldehyde ketone carboxylic acid and present here as a 37 to 40% solution of formaldehyde in water is also called as a formalin solution, and it is used for disinfectant or preservative for the biological species. ਉਹਦੇ ਲਈ यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ formalin solution. ठीक है, next है Clampton reduction, also a part of next chapter. So let's read here. In the Clampton reduction, the chemical reaction described here is a reduction of aldehyde or ketone, ठीक है, to give the alkane with the zinc amalgamated and concentrated HCl. In case of here, that is a reduction of keto group. ठीक है, for example ketone has zinc mercury HCl that will form a alkane formation directly, as this can be written as keto group change into the CH2 formation. ठीक है जी, simply acetaldehyde है, ethane formation है, that is acetone है, propane formation है. ठीक है, next है what do you mean by tolerant reagent? Tolerant reagent refer to a chemical reagent which is used in the direction of aldehyde functional group, an aromatic aldehyde functional group, or alpha hydroxy ketonic functional group in a given tested substance. And tolerant reagent, it is a solution of a silver nitrate and ammonia. ठीक है, and last question is the methanol is soluble in water, and the solubility of lower alcohol in water is due to the formation of hydrogen bond between the alcohol and water molecule. Therefore the methanol is soluble in water due to the hydrogen bonding between the methanol and alcohol. As in case this is a methanol molecule, this show again water then hydrogen bonding formation है, इधर भी hydrogen bonding है. It means they have tendency to show maximum hydrogen bonding. जितनी hydrogen bonding ज़्यादा होगी उन्नी boiling point ज़्यादा, उन्नी solubility ज़्यादा होगी. ठीक है जी. सो ये सी साढ़े कोल 12th क्लास केमिस्ट्री ਦੇ अल्कोहल फिनोल चैप्टर ਦੇ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ਜਿਹੜੇ मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपैक्टेड ਜਿਹੜੇ लास्ट 10 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ. ਅਗੇਨ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ.